जी नमस्कार। तो प्रोग्राम स्टार्ट करें। आनंद जी थोड़ा जीपीएफ में ठहरे हैं, तो वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो वो कोशिश कर रहे हैं 10 मिनट में वो जुड़ेंगे। कोई बात नहीं। Dear and respected friend, thank you so much for your kind participation in today's GSDS weekly dialogue. Today we are remembering a great soul who has deep quest for justice, equality, and democracy. So the topic of today's weekly dialogue is remembering late Shri Shanti Bhushan and his legacy. We welcome you all. We welcome our speakers. We welcome Shri Ashok Pandaji, Senior Advocate, Supreme Court of India. We welcome Shri N.D. Pancholi Sahab, Nurturer of Citizen for Democracy. We welcome Shri Raghu Kumarji, Convener of Center for Social Dialogue, but also a prolific writer. We will be joined by Shri Anil Nauriya ji, who works in Supreme Court Counsel, and also our Professor Anand Kumar, nurturer of GSDS Dialogue. We welcome Dr. Suresh Khairnar ji, ex-president, Rashtra Seva Dal, and a deep learner, and he has very deep quest for democracy. So we welcome you all. We welcome Professor Meera Chakrabarti and all friends co-present here. GSDS stand for Gandhian School of Democracy and Socialism Forum, which is a platform to promote understanding the dynamics of society with quest of freedom, justice, equality, and fraternity. It focuses on knowledge and dialogue among concerned persons. We organize dialogue every Friday, and we invite people from different fields of life to share with us their life's vision and sadhana for creating more just society. So today we are remembering a great man, a great soul, Shri Shanti Bhushan ji, who represents courage, conviction, and quest for more just society. He has always independent thinking, and he is perhaps the most courageous liar, and he always stood on a high pedestal, espousing honesty in judicial life. As you know, judiciary is one of the important components of our separation of power. So inculcating the idea of democracy and democratic ethos in that particular aspect of democracy is always cherishable. So we cherish his legacy. So first, I would like to invite Sri Pandaji, Ashok Pandaji, to share some of his reflection on sadhana of Sri Shanti Bhushan in 10 to 12 minutes. So, Ashokji. Please unmute yourself. Yes. Good evening to all my dear friends. I would like to share my association and my thoughts on Shanti Bhushan. When we were activists during the emergency days, we were all opposed to the kind of emergency regime we had from 75 to 77. So naturally, we came to know of Shanti Bhushan. And that was the time when we were very fortunate that we had Justice Karkunde
We had so many other people. Subsequently, we came in contact with, say, Mr. K.G. Kannaviran, Surendra Mohanji, all these friends, the senior friends. They were legendary figures, but for us, they were like our elder people, senior people. And Shanti Bhushanji, he started his career and became very successful in his early life. And he was one of the youngest Advocate General of UP, Allahabad High Court. That is how, he emerged. Then after that, during emergency, before emergency, long before emergency, he appeared on behalf of Raj Narayanji and succeeded in the historic case which set aside the election of Mrs. Gandhi, disqualified her. And after that, he became a regular feature in Supreme Court. That is how I would like to remember him. And during emergency also, he appeared in habeas corpus case, that is ADM Jabalpur. And the other cases were also there. Then in 1977, he became law minister of our country. That was with Morarji Bhai as the prime minister. And then after 1980, he has been an iconic figure so far as Supreme Court bar is concerned. He was there in almost all right causes. If you remember, in 1989 also, when the election took place in Amethi, he was our leader of the team on behalf of independent initiative, which was led by Justice Krishna. And all of us, we went to Amethi, and then we gave our report, and that was widely publicized as to what was happening in Amethi in 1989. Then VP Singh comes to power, and that is how we move on. Then in every stage of life, Shanti Bhushanji, he emerged as a champion of human rights and all the issues that related to strengthening democracy in the country. And we are very fortunate that he continued to be with us till 97 years, which is a rare thing. Justice Tarkunde passed away at the age of 96. And that was 2004, I suppose. He passed away around that time. Then when you look back, we have lost almost all our senior leaders in human rights movement. After Justice Tarkunde, Justice Rajendra Sachar, Anil Diwan, Mr. Soli Soravji. So the bar has lost Ashok Desai, all these people. But I'm very hopeful that new people will come up, and they will lead the human rights movement, not only in legal field, but elsewhere also. So, the best way to pay tribute to Shanti Bhushanji will be that we must uphold the cause of democracy, and we should try to mobilize public opinion on different issues that are emerging, because we cannot foresee issues, what will be coming. But the main issue will be protecting democracy in the country and fighting for the rights of the common man. That is the main issue that I have in mind. If we devote ourselves to these causes, then that would be the best tribute to Shanti Bhushanji. Thank you. Thank you so much, Sri Pandaji. And that is the legacy that we should cherish. He has always quest for making democracy more just. And at the another side, he was also empowering democracy with PIL and all. So how I would like to invite Dr. Raghu, who has deep engagement with
his earlier time with law and legal studies, and now he writes social science also. So, Raghuji, over to you to share some of your reflections. Thank you, Randhir. Thank you very much for me giving this opportunity of participating in this session. I just whenever the name of Shanti Bhushan ji comes to my mind, I remember the 44th Amendment to the Constitution of India, because after the emergency is over and the elections were held and Janata government has come to power, Shanti Bhushan ji, as the law minister, has introduced the 44th Amendment to the Constitution, which actually tried to redo all that incorrectness that crept into Indian Constitution. And that amendment to that objective resolution, which was introduced for 44th Amendment of the Constitution on 9th May 1978. I think well, as a student of law and also as a man interested in the Constitution of India, we know what the damage has been done through the 42nd Amendment, which many legal circles people call it as a mini constitution. It tried to actually change the very nature of Constitution. So immediate after emergency, there were two threats for the constitutional democracy of India. That is the possibility of again coming with the emergency by any subsequent political leadership at his whims and fancies. That was one threat. And the other threat was to strengthen certain areas of Indian Constitution if and when such an emergency takes place. And the other was of the recent memory at that time of Minerva Mills case, where the constitutional amendment, the possibility of constitutional amendment was restricted by the constitutional bench of the Supreme Court, laying down the basic structure of the Constitution and also the areas which cannot be changed. So in terms of those three areas, that is preventing the possibility of emergency at the will and whims and fancies of an individual leader, certain safeguards were introduced into Article 368 and as well as Article 352 of the Constitution of India. And not only that, certain provisions like Article 20 and 21 cannot be abrogated even during the emergency, was another addition to the safeguards of the Indian Constitution in terms of fundamental rights. So though I cannot claim that I'm a great activist, I am more interested as a student of law in understanding and remembering the Constitution, or the contribution of Shri Shanti Bhushan ji. Now Shanti Bhushan ji and Prashant Bhushan ji will be remembered as the fighters against corruption in Indian judiciary. They were the vocal voices always available to us. And with the loss of Shanti Bhushan ji, I think there is a lot of what's called as a loss to the legal community and to the voices against the corruption in the prime institutions. So with these few areas of my what's called as consideration, I thank once again GSDS for giving this opportunity. I pay my tributes to Shanti Bhushan ji. Thank you, Raghuji. Thank you so much for your kind and deliberation. मैं अब दरख्वास्त करना चाहूँगा डॉक्टर सुरेश खैरनार जी. डॉक्टर सुरेश खैरनार जी राष्ट्रीय सेवा दल में रहे हैं, लेकिन वो बहुत करीब से जयप्रकाश नारायण मूवमेंट को और शांति भूषण के कामों को जानते हैं और समझते हैं. तो मैं
समय न गवाते हुए डॉक्टर खैरनार से निवेदन करना चाहूंगा कि वो कुछ जी। जी नमस्कार। नमस्कार। गौतम, आपने सही कहा। जयप्रकाश नारायण आंदोलन के कारण ही शांति भूषण ये नाम 12 जून 1975 के दिन हमने पहली बार सुना। राजनारायण जी की केस कोई तो भी वकील लड़ रहा, इतना ही मालूम था। लेकिन जब जगमोहन सिन्हा जी के द्वारा ये जजमेंट जब आया मिसेस गांधी को डिस्क्वालीफाई करने का, और उसके दूसरे क्षण से शांति भूषण ये नाम इक्वली इस देश के नक्शे पे आ गया। और एक मजेदार वाकया है, उसके बाद जेपी जब इलाहाबाद गए तो उन्होंने उत्सुकता जाहिर की। हमारा युवकों का सम्मेलन था इलाहाबाद में, देश भर से हम लोग इकट्ठा हुए थे। तो शांति भूषण जी से मिलने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उनको पहले से नाम पता चल गया था। तो जब शांति भूषण जी मिलने आए तो जेपी ने कल्पना की थी कि बहुत कोई सीनियर लॉयर होंगे। उस समय उनकी उम्र 45-46 साल की थी, यंग वकील थे। तो जेपी हंस के बोलने लगे, अरे मैं तो आपको बहुत उम्रदराज वकील समझ रहा था, आप तो एकदम तरुण वकील हो, बिलो 50 हो। जब नाम पूछा तो कोइंसिडेंटली शांति भूषण जी के पिताजी जेपी के दोस्त निकले। और जेपी हैरान हो गए कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के कारण जो भी अलग अलग इलाहाबाद की फैमिलीज इन्वॉल्व हुई थी, नेहरू फैमिली से लेके, उसमें एक भूषण फैमिली का भी इतिहास है स्वतंत्रता आंदोलन में, जिसमें शांति भूषण जी के पिताजी भी आजादी के आंदोलन के साथी रहे। इवन चंद्रशेखर आजाद भी उनके घर में आना जाना रहा। इस ढंग का मतलब शांति भूषण, प्रशांत भूषण यही नाम नहीं, इसके पीछे की भी हिस्ट्री में इलाहाबाद शहर में एक ऐसा परिवार है जिस परिवार का आजादी के आंदोलन के साथ का भी संबंध रहा। और उसके बाद में वो भारत के कानून मंत्री बने, ये भी हम देख रहे थे। हमारे मधु दंडावती और लोग, फर्नांडिस साहब, सब दोस्त लोग मिनिस्ट्री में गए। लेकिन शांति भूषण जी का संबंध हमारा ये सब खत्म होने के बाद में, जब वो एक वकील के तौर पे नर्मदा बचाओ आंदोलन की हमारी केस जो थी, नर्मदा बांध को लेकर विरोध करने का हमारा जो आंदोलन चल रहा था, और साथ साथ हमारी कोर्ट में याचिका भी दायर थी, और जिसको शांति भूषण जी देख रहे थे। तो उस कारण शांति भूषण जी के घर आने जाने का क्रम जारी हुआ। और उनका जो व्यवहार देखा मैंने, क्योंकि उसके पहले मैं दूर से ही शांति भूषण नाम देख रहा था, सुन रहा था, पढ़ रहा था। लेकिन नर्मदा आंदोलन के समय में जब हम लोग जाते थे केस के संदर्भ में, तो सबसे पहले तो हमारे खाने पीने की बात की पूछताछ करते थे, जो कि वो प्रोफेशनल वकील थे, उनका ये कोई जरूरी नहीं था। लेकिन हम उस ढंग से तो क्लाइंट थे नहीं उनके, कमर्शियल वाले। हमारे केस में ना वो कोई पैसा ले रहे थे ना कुछ कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का खाने पीने का भी ख्याल रखते थे। और सबसे क्लाइमैक्स की बात, निकलने के समय किराया पूछते थे कि जाने के लिए आपको किराया है क्या, वापसी का। ये मेरे जीवन में कोई भी वकील दोस्त मुझे देश भर के जो भी याद आते हैं, उनमें एक रेयर उदाहरण है कि जो हम लोगों को किराए की भी उन्होंने ख्याल रखा। खैर उस समय 100-200 रुपये में ही हम लोग को टिकट मिल जाते थे। और उसका बाद में हम लोगों का NAPM का जो कार्यालय बना था लाजपत नगर में, वो थोड़ा सा तलघर में था, नीचे में, बेसमेंट में। वो देखकर उनको दया आई, तो लंबे भी थे, उनको खुद को नीचे उतरने में दिक्कत होती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अगर बुरा न लगे तो मेरा एक मयूर विहार में मकान खाली हो गया है, तो आप थोड़ा आके देख लीजिए। तो साथ में लेके गए, और वो सुप्रीम एनक्लेव का मकान देखकर तो मैं खुद दंग हो गया, क्योंकि वहाँ सब रिटायर्ड जजेस, सब बड़े बड़े वकील, कामिनी जायसवाल से लेके क्या क्या नाम पढ़ के मैं तो एकदम दंग हो गया। मैंने कहा कि यहाँ हम लोगों को फटेहाल पजामा कुर्ता वाले कार्यकर्ताओं को, तो बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये सभी लोग बहुत संवेदनशील लोग हैं, आप लोग खाली बोलिए, ये आपको ठीक लगा क्या। वो 2,500-3 हजार फीट का वो डुप्लेक्स टाइप का घर था, जो उन्होंने NAPM को बगैर किराए से, उल्टा गद्दे, टेलीफोन कनेक्शन, गैस और क्या क्या सब चीजें खुद लगवा के दी थी। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप की कल्पना क्वाइन की है।
वो मुख्य रूप से उद्योगपतियों व्यापारियों के लिए थी, लेकिन वकीलों में मुझे ट्रस्टीशिप की कल्पना को अमल में लाते हुए मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन शांति भूषण जी के बारे में है कि जो खाली प्रोफेशनल वकील नहीं थे, वकील तो बहुत बड़े थे, शायद कुछ प्रोफेशनल फीस भी उनकी काफी कुछ होगी, लेकिन हम लोगों के साथ सामाजिक सरोकार के कारण जो संबंध आया उसमें मुझे उनमें एक ट्रस्टीशिप का वकीलों के प्रतिनिधि के तौर पे शांति भूषण जी का परिचय मैं जानता हूं। और दूसरे जिनका नाम लिया आप लोगों ने, बैरिस्टर वीएम तारकुंडे, एमएन रॉय के अनुयायी होने के कारण तारकुंडे जी से मेरा बहुत पहले से परिचय था, इमरजेंसी से भी था। जब वो आते थे अमरावती तो मैं ही उनको वेलकम करना, उनका कार्यक्रम रखना। वो पीयूसीएल के प्रेसिडेंट थे, वर्किंग प्रेसिडेंट, और जेपी प्रेसिडेंट थे, और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट थे एसएम जोशी। तो इस कारण वीएम तारकुंडे जी से भी संबंध आया। अब अभी अभी उल्लेख हुआ कि वीएम तारकुंडे, बैरिस्टर अपने जस्टिस सच्चर और कुलदीप नायर, इस कड़ी में दिल्ली के और पर्टिकुलरली मानवाधिकार के पूरे अभी के माहौल में शांति भूषण जी मेरे हिसाब से आखिरी स्तंभ थे। अभी नए स्तंभ जो भी आएंगे दिखेंगे वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान तारीख में जिस दिन रणधीर आपकी पोस्ट मैंने पढ़ी ही इज नो मोर, उस दिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर धक्का लगा कि अब मानवाधिकारों के मुद्दों के लिए हम किन के पास हक से बिल्कुल निसंकोच होकर जा सकते। उसमें एक नाम शांति भूषण जी का था। उनके घर हम बेखटके जाते थे, वो बहुत आदर सम्मान से स्वागत करते थे और हमारी बातों का लिहाज करके वो मामले भी लेते थे। लेकिन अब मेरे हिसाब से भारत के मानवाधिकारों के आंदोलनों में का एक अंतिम स्तंभ गिर गया है, नया स्तंभ बनेगा इस उम्मीद के साथ में। मैं हालांकि प्रशांत भूषण से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस तरह की ही अपनी परंपरा परिवार के चला रहे हैं, तो मैं हृदय से उनके आत्मा को शांति की प्रार्थना करता हूँ। और हमने एक बहुत बड़ा मानवाधिकार का स्तंभ खोया है, इसके बारे में मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश खन्ना जी। Now I request Shri Anil Nauriya ji to kindly share some of his thought about late Shri Shanti Bhushan ji. Thank you, Randhir bhai. Can you hear me? Yes, yes. Well, I just want to say that Shanti Bhushan ji, as a lawyer, was most remarkable. He was a strong advocate of whichever cause he took. Face is not seen. Oh, you. Suresh ji, my face is not so important. Some screen is I think so one. कोई बात नहीं, वो पीछे वाला कैमरा स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, आवाज आ रही है थोड़ी सी। वीडियो अभी रुके सर। ठीक है, ठीक है, हो गया जी। Tap to speak இருக்கா? तो இல்ல சார். இல்லப்பா, அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் வருதா? அவர் ஒருத்தர் வந்து சுரேஷ் வந்து டோபி பட்டிட்டு பேசிட்டு இருக்காரு. Okay, so long as you can hear me, I will just say that Shanti Bhushan ji, it was always a pleasure to hear his arguments. He was never cowed down by the court. In fact, he always stood up for whatever cause he took up. And he even took up causes which lawyers sir, Wi-Fi or cellular data dial in. அதுதான் கிளிக் பண்ணுங்க. Can you hear me? Able to hear, sir, but we are unable to see your face. You don't worry about that. Don't worry, it's okay, it's okay. Some computer, I think so. There might be some problem. Anyway, okay. Not problem. Some computer screen, if you adjust that screen. So long as you can hear. So what I was saying was that he was a pillar of the bar. He took up causes which lawyers would sometimes hesitate to take up. And
in spite of several years of public service and the public offices that he held, he had no heirs. All these years of public office, serving in he was Union Law Minister during the Janata government, and he was instrumental in to a large extent in reversing some of the amendments that had been made to the Constitution by the emergency regime. So many of those amendments, to the extent possible and feasible, were reversed by a constitutional amendment that took place when Shanti Bhushan ji was Union Law Minister. Not everything was reversed, because certain things which he considered beneficial were retained, or certain things which were because the amendment had to take place with consensus of the other parties in the House, in the two houses. So whatever maximum consensus he could arrive at, he sought, and then some of the more damaging amendments made during the emergency were, by the 42nd Amendment, were reversed by the subsequent amendment during Shanti Bhushan ji's time. And it was always a pleasure to talk to him, because he had no heirs. So he was very accessible. But today I want to talk, there'll be so many people talking about Shanti Bhushan ji, and there'll be so many people, and this, I suppose there will be a series of meetings. Today I just want to talk about the family background of Shanti Bhushan ji, because Suresh ji mentioned that he was a freedom fighter. He came from a freedom fighters family. So I just want to read an extract from my own grandfather's memoirs about Shanti Bhushan ji's father and Shanti Bhushan ji's mother. So if I have your permission, I'll just read a little bit. Is it all right? Yes, yes, all right. सन 1921 में एक तरफ तो स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बॉयकॉट, और दूसरी तरफ विलायती कपड़ों के बहिष्कार का आंदोलन जोरों पर था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की आज्ञानुसार हमें जगह जगह में विलायती कपड़े इकट्ठे करके होलियां जलानी थी। हम लोगों के घर घर कपड़े मांगने हमने लोगों के घर घर कपड़े मांगने शुरू कर दिए। श्री विश्वामित्र, ये उनका फादर का नाम था, विश्वामित्र, शांति भूषण जी के फादर। श्री विश्वामित्र वकील उन दिनों बिजनौर में वकालत करते थे। उनकी धर्म पत्नी ज्ञानवती जी को मैं जानता था, क्योंकि वे मेरठ के पुराने कांग्रेसी नेता बाबू ज्योति प्रसाद की बहन है। मैं उनके घर गया तो विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या सेवा कर सकता हूं? मैंने उत्तर दिया, सबसे बड़ी सेवा यही है कि शर्म की झूल उतार फेंको। इतने में ज्ञानवती जी, जो उनकी शांति भूषण जी की मदर ज्ञानवती जी, इतने में ज्ञानवती जी ने कुछ रेशमी साड़ियां संदूक से निकालकर हमारे सुपुर्द कर दी। स्त्री को अग्रसर देखकर विश्वामित्र जी को जरूर कुछ शर्म आई होगी, क्योंकि उन्होंने छड़ी से अपने गरम कोट को खूंटी से उतारकर मुझे दे दिया। विलायती कपड़े मांगते हुए हम ऐसे लगते थे जैसे कि सूरज ग्रहण के समय दान मांगने वाले ब्राह्मण और कपड़ा मांगने वाले मेहतर। विश्वामित्र के कोट को अपने गधे पर लादकर मैंने ऐलान कर दिया कि विश्वामित्र कांग्रेस के मेंबर हो गए। वह तो सचमुच ही हो गए। उनके दूसरे साथी नेमिशरण जैन, जिन्होंने नई वकालत शुरू की थी, बड़े उत्साही युवक थे। हम उनके घर पहुंचे और नए मुंडे फकीर विश्वामित्र को भी साथ ले गए। हम लोगों की सूरत देखते ही
हम लोगों की सूरत देखते ही नेमिशरण जैन समझ गए, अपने स्त्री से परामर्श करके उन्होंने भी विलायती कपड़े उतार दिए, ये भी कांग्रेस में आ गए। तो ये स्टोरी है सन 21 की, जब ये कपड़ों का बहिष्कार, कपड़ों का बॉनफायर्स फॉरेन क्लॉथ का चल रहा था, और उसी जमाने में विश्वामित्र जी भी कांग्रेस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए। So I just wanted to read this, that this was the family background of both his parents, that is Shanti Bhushan ji's father and Vishwamitra ji, and Shanti Bhushan ji's mother Gyanvati ji. और जो बात सुरेश जी ने बोली कि चंद्रशेखर आजाद वगैरह उनके घर आते जाते थे, वो भी सही है, क्योंकि ये भी बात मैंने अपने नाना जी से सुनी थी कि काकोरी कांड के सिलसिले में एक तार मेरे नाना जी के लिए, जब वो ठहरे हुए थे विश्वामित्र जी के यहाँ बिजनौर, तो एक तार आया था जो विश्वामित्र जी ने पास ऑन नहीं किया, तो उसकी वजह से मेरे नाना जी की अरेस्ट नहीं हुई। तो वो बड़ी अपने फ्रेंड्स के बारे में बड़े प्रोटेक्टिव भी रहते थे। तो बस इतनी बात कि वो जो सुरेश जी ने बताई बात कि आपसे पूछते थे कि किराया है कि नहीं, वो बात उनके फादर में भी थी, और ऐसे कई किस्से हैं, तो कहाँ तक सुनाएं। बस इतना मैं बताना चाह रहा था कि इस बैकग्राउंड से शांति भूषण जी आते थे, और जो कुछ वो उनकी लाइफ में अचीवमेंट्स हुए, उसका एक फाउंडेशन इस फ्रीडम स्ट्रगल के बैकग्राउंड में भी आपको मिलता है। जी, बहुत धन्यवाद। और काफी गहरी स्टोरी थी, जिससे वो पृष्ठभूमि पता चलता है कि वो किस पृष्ठभूमि से थे, और नेशनल मूवमेंट की जो वैल्यूज है, जिसको उन्होंने सीखा बचपन से, और लास्ट समय तक उन्होंने उसको चेरिश किया। बहुत धन्यवाद। अब मैं एनडी पंचोली साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने विचार रखें। धन्यवाद रणधीर जी। जब ये खबर आई शांति भूषण जी के बारे में, तो एक बहुत धक्का सा लगा, और वो सारा इतिहास एक नजरों से गुजरने लगा। इमरजेंसी से पहले की घटनाएं, इमरजेंसी में, और उसके बाद एक गैलेक्सी थी, दैट वाज ए गैलेक्सी ऑफ ब्रिलियंट एडवोकेट्स। एक ग्रुप था जिसमें ही वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर। वो 4-5 लोग थे, लाइक देयर वाज जेठामलानी जी, तारकुंडे जी, एंड हरदेव सिंह. So these Palkiwala ji, he was a great. So that was a group of brilliant advocates who were committed for preserving democracy, democratic values in the country, civil liberties, or civil liberties, human rights activist के लिए he was a inspiration. और जब भी कोई इश्यूज आते थे, वो लोग बैठते थे, जुडिशरी को कैसे इंडिपेंडेंट रखा जाए, जुडिशरी में कैसे करप्शन को दूर किया जाए. These were the questions which were troubling them, and they were having meetings, discussing, trying to involve certain movements or certain campaigns for that. Organization भी बनाई थी judicial accountability की. So far as that I think that still continues. Prashant Bhushan is continuing that. और वो जो माहौल था 74-75 का, 73-74, the movements were going on in the country against the corruption which was prevailing in the society, and the unrest which was erupting. This
वो Indira ji had come on the slogan "Garibi Hatao" in 1971, and she had claimed that she will raise the standard of the people, remove corruption. She will do a lot of things for the people, but instead of that, this unemployment and this problems of the people were going on increasing, so that unrest was there. So people were trying to organize and trying to do something, and Jayaprakash ji was there. In the midst of that movement, those unrest, those campaigns, that judgment came on 12th June 1975, in which Indira Gandhi's election was declared unlawful, and that case was argued on behalf of Raj Narayan ji by Shanti Bhushan ji. So it was a kind of great event which contributed to the campaigns of the opposition parties, and then there was demand कि भाई आप ये छोड़ो, गद्दी छोड़ो अभी तो, क्योंकि इतना कोर्ट का आ गया कि आपने जो इलेक्शन जो है उसमें आपने इलीगल मींस किए और आपने उसको ये अब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, रिजाइन। तो ये डिमांड हुआ, और उसके बाद जो घटनाएं हुई उस जजमेंट की वजह से वो भी जजमेंट में भी बहुत उसका कंट्रीब्यूशन था कि जिस इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी में फिर जो वायलेशंस हुए, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हुए, तो उसमें भी शांति भूषण जी सबके साथ आगे आगे रहते थे। तो एक बहुत बड़ा पिलर, जो जैसे खैरनार जी ने कहा, he was one of the pillars of that, the supporters of human right activities, human right movement, civil liberty movement. मैं उनका अभी ये बाय चांस मेरे हाथ में, हमने एक मीटिंग की थी, उनको बुलाया था, दक्षिण एशिया में राज्य और मानवाधिकारों का 50 वर्ष, तो वो बोले थे, तो उनके अंश हैं उनके लेक्चर के उस समय के, तो 1997 में उन्होंने ये लेक्चर दिया था। तो वो कह रहे थे पुलिस और न्यायपालिका के ऊपर कि बहुत समय पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन मुल्ला ने अपने एक फैसले में कहा था कि भारत की पुलिस देश में अपराधियों का सबसे बड़ा संगठित गिरोह है। हालांकि यह एक कठोर वक्तव्य है, लेकिन पुलिस द्वारा आम नागरिकों पर ढाई जाने वाली दुष्टता और बर्बरता को देखते हुए यह टिप्पणी पुलिस चरित्र की अनुचित आलोचना नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय जनता को आतंकित करने व अपना गुलाम बनाए रखने के एक औजार के रूप में भारतीय पुलिस की स्थापना की थी। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी इस देश की पुलिस के ढांचे, चरित्र और उसके मुखौटे में बदलाव लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। भारत में पुलिस की मौजूदगी में हम असुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरे देशों में आम लोग पुलिस वालों को अपना दोस्त समझते हैं, किंतु हमारे देश में उनको भय और घृणा की नजर से देखा जाता है। तो देन ही गोज ऑन के भाई हाउ दिस पुलिस सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड, देयर शुड बी रिफॉर्म in the police administration. तो मैं जो पर्सनली जो मेरा, हम उनके साथ बहुत मूवमेंट में रहे, लेकिन मैं उस केस की याद दिलाना चाहता हूं जो हमने पंजाब पे सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से हम 5 लोग गए थे। अमिया राव जी थी, मैं था, अरविंदो घोष थे, तेजिंदर सिंह थे। तो हमने जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था उसमें 1984 में जो हुआ था, और उसके बाद टाडा लगा और पंजाब के अंदर जितना
दमन हुआ टाटा की वजह से, और ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में कुछ पता नहीं लगता था क्या हुआ। एक सिर्फ एक वन साइड वर्जन वाज देयर कि देयर वर टेररिस्ट एंड मिलिटेंट्स एंड दिस, there was no option but to attack Golden Temple, and the Punjab was saved. That was the official version, and this version was being spread by the media also. So the other side, there was censorship also during that time that was imposed. So our team on behalf of Citizens for Democracy, they went there when this censorship was lifted in 1985. Then after 6 or 7 months, we toured the we went to several villages, interviewed the people, and we also investigated what happened actually during that attack on Golden Temple by the Indian Army. And we gave a report. That report was immediately banned. It got a wide publicity, and but on the next day we were arrested. I got the bail after 2-3 days, but our other two friends, Arvindo Ghosh and Tejinder Singh, they were also arrested by the police, and the application was filed by the police before the magistrate to send them in the judicial remand. Then we requested Shanti Bhushan ji to come and argue on their behalf. Shanti Bhushan ji ने जिस प्रकार से आर्गू किया, देखिए अब तक हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको क्या तो पुलिस रिमांड में भेजा जाता है या उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा जाता है। लेकिन शांति भूषण जी ने उस केस को इस तरीके से आर्गू किया, उन्होंने कहा कि इसमें तो केस ही नहीं बनता। मजिस्ट्रेट को ये राइट है, अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि इन्होंने कुछ किया है तो ही उसको जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड में भेजेंगे, लेकिन जब इनके ऊपर केस ही नहीं बनता है तो आप इनको छोड़ सकते हैं। तो दैट वाज ए very major legal point which was being argued for 3-4 days before and he came. You see, हम लोगों ने कहा था अरे शांति भूषण जी कहाँ है, मजिस्ट्रेट के सामने क्या आएंगे, वो तो इतने बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आर्गू करते हैं। मजिस्ट्रेट के और सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील हैं वो कभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के यहाँ आर्गू करने नहीं आते, लेकिन वो आए और उन्होंने आर्गू किया, और मजिस्ट्रेट ने उनकी आर्गुमेंट सुन करके ये कहा कि भाई इन्होंने तो एक अपना जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी है, सरकार ने जो भी किया पंजाब के, तो दैट इज द पीपल्स हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, दे हैव अ डेमोक्रेटिक राइट on that was the argument of Shanti Bhushan ji, and on the basis of that argument the magistrate said that there is no reason that they should be sent to judicial or police custody. I am letting them free. Police may continue their investigation, but so far as these two people are concerned, I cannot send them to jail. So that was a major victory for the human rights activists at that 1985. तो और बहुत सारी बातें हैं, याद आते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो लास्ट वो जो पिलर है हमारे ह्यूमन राइट मूवमेंट का, वो थोड़ा वो गिर गए हैं। और अब जैसा खैरनार जी ने कहा कि भाई किस प्रकार से अब आगे कुछ आएंगे, तो आएंगे, लोग आएंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद एंडी पंचोली साहब। और आपने जिस तरीके से सिटीजन डेमोक्रेसी के साथ श्री शांति भूषण का जो सहयोग रहा है उसको आपने कुछ उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया, इसके लिए आपको बहुत आभार।
हमारे साथ कुछ और भी गणमान्य साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि 2 से 3 मिनट में अपने बात को रखें। तो प्रोफेसर मीरा चक्रवर्ती से आग्रह है कि वो अपने संस्मरण रखें। जी। सबको नमस्कार. Thank you, Randhir. Yes, this reminds me that since my father was also in the Gandhiji's movement, and I feel the great service that this galaxy of people have, contributed is to provide democracy with a discursive space for reconnecting people with people, because the defeat that came in June for Mrs. Gandhi, she couldn't take it, and she was trying to subvert democracy, oppress people, because we were also part of the movement here in the socialist movement in the south. And Dandavati ji, Surendra Mohan ji, Chibbar Saab, all these people they had visited, and they were some of them were in Bangalore Central Jail, and we used to visit them during emergency. That is, it happened. So what I rightly said, as Randhir was saying, the legacy is the legacy that we have. I just was amazed when Krishna Ayar ji used to come. So old he was. He used to come to our women's meet and used to support us for the cause that we were standing. Surendra Mohan ji has done it. Dandavati ji has done it. Pramila ji has done it. So this is the legacy that we get, and therefore I feel that this assertion, the kind of that the Shanti Bhushan ji has given, gave a renewed identity of democracy, which was kind of damaged by such action of Mrs. Gandhi. And so जो आपने कहा खैरनार साहब की ये किराया पूछते थे, we in the women's movement, we use, because the very poor women will come, and they can't go to court because they have no money. So we used to provide them with this kind of legal help. We approached the National Law School of India, and then we asked them to. So this is the legacy that we inherited, and because of this, I think we used to ask them, because they will come all the way without any bus charge or something. So we used to provide them. Why we used to provide them? Because we had this legacy, and I really grateful. I'm really grateful to this galaxy of people, which today I do not find. Maybe, as you said, we should be hopeful. So we are. Thank you for giving me this chance. Thank you very much. Thank you, Professor Meera Chakrabarti. हमारे साथ GSDS के श्री बाजपेयी जी हैं, तो मैं आलोक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 2 मिनट में अपने कुछ अगर संस्मरण। आलोक जी कुछ समय ले रहे हैं, तो तुलसी पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और तुलसी जी आपसे आग्रह है कि आप 2 मिनट में अपने कुछ संस्मरण। अच्छा, 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मैं दिवंगत आत्मा जिसने ह्यूमैनिटी का इतना बड़ा काम किया, सहयोग दिया, उसके लिए उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत करती हूँ, और पूरे परिवार को और पूरी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को इनकी तरफ से नमन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। एडवोकेट शकील अहमद जी मुंबई से जुड़े हुए हैं। शकील भाई, आपसे आग्रह है कि 1 मिनट में या 2 मिनट में अपने विचार को रखें।
है। So on behalf of GSDS Forum, we are very grateful for your kind participation, and we are very grateful particularly to our speakers, Shri Ashok Panda ji, Shri Pancholi Sahab, Shri Anil Nauriya ji, Dr. Raghu ji, and Dr. Khairnar, Professor Meera Chakrabarti, Professor Gyan Guloi, और जो भी आज हमारे साथ ही जुड़े, उनको तहे दिल से बहुत धन्यवाद। और इस विश्वास के साथ और इस आशा के साथ हम आज की तरह से श्रद्धांजलि सभा ही हो गई पर कि जो उनकी लेगेसी है, जो डेमोक्रेसी में जुडिशरी को इम्पार्शियल बनाना, ऑनेस्ट बनाना, और जो नॉन पार्टी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जैसे सिटीजन डेमोक्रेसी, PUCL, इन संस्थानों का भी लोकतांत्रिकरण में जो योगदान हो सकता है, उसमें अगर हम कुछ अपनी भूमिका निभाएंगे तो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद।